बेस्ट स्किल टू मेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी? ग्रुप्स पे डाली, वहां पे लोगों ने हमें किक आउट कर दिया. इन जनरल द बेस्ट टाइम टू लैंड इन कनाडा बिकॉज जिसको नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ानी है प्लीज बढ़ाओ. अरेंज मैरिज, शादी.com. हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल. आज है नो फिल्टर थर्सडे एंड आज है नवजोत की बारी. नवजोत से हम पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं. इट्स गोना बी लॉट ऑफ फन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला क्वेश्चन, कैलगरी कब शिफ्ट हो रहे हो? कैलगरी हम नहीं शिफ्ट हो रहे हैं. हमने पिछली वीडियो में बोला था वी विल बी स्टेइंग इन किचनर बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा फैमिली है. सो या कैलगरी हम जाएंगे वहां पे क्लोज करने अपना घर, बट शिफ्ट नहीं हो रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजोत पाजी कुकिंग करते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं सिर्फ ब्रेड ऑमलेट बनाता हूँ, पिछले 7 साल से बना रहा हूँ. एंड उसके अलावा मैं कोई भी कुकिंग नहीं करता. मैं मैगी भी ठीक से नहीं बना पाता. Yes. और ना मेरे को खाने का इतना शौक है और ना मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कोई बनाए. सो कुकिंग से बनाता है अंडा ब्रेड नवजोत ही बनाता. या मेरे को कवर अप कर रही है, बट मैं कुकिंग से कोसों दूर हूँ. मैं नॉन वेजिटेरियन बन गया था क्योंकि मैं अकेला रहने वाला था हांगकांग के अंदर. वहां पे वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं थे, तो मैं नॉन वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एवर प्रोक्रेस्टिनेट? इफ यस, हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड? बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ. बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, बट दैट्स अ गुड थिंग एज लॉन्ग एज इट इज फॉलोड बाय एक्शन. एवर एक एंड डेट डालो. अगर प्रोक्रेस्टिनेट कर भी रही हो, एक एंड डेट डालो, बिकॉज अगर वो एंड डेट नहीं डलेगी तो वो काम नहीं होगा. एंड दैट्स हाउ आई मैनेज इट. आई मेक श्योर कि मैं अगर आज कुछ सोच रहा हूँ और मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ तो मैं 4 महीने से ऊपर प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूंगा. उसके बाद मेरे को वो करना ही करना है. What Navjot does is अनाउंस कर देता है पब्लिकली. एक तो सबसे बेस्ट बात नवजोत की, ये डर नहीं लगता है इसको. पब्लिकली अनाउंस करता है, फिर कहता है करना तो पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है. सो दैट्स हाउ ही डज दैट. मैं अपने आप को बेसिकली अकाउंटेबल ठहरा रहा हूँ, राइट? सो आई एम जस्ट अनाउंसिंग इट एंड देन आई हैव टू डू इट एंड दैट्स द वे आई मैनेज इट. Was initial 3 months tough without a job? Were you demotivated and did you take any small roles? बहुत डिफिकल्ट था, बट इट वॉज नॉट जस्ट फॉर मी. कोविड था, जैसे अभी रिसेशन आने वाला है, उस टाइम पे कोविड था. बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी. डिमोटिवेटिंग था 100%, बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे को तब भी लोग जॉब नहीं दे रहे थे. बट मैंने सर्वाइवल जॉब जो हैं वो नहीं करी. एंड उसका रीजन ये था कि सिमरन की जॉब लग चुकी थी एंड इसलिए हमारा थोड़ा घर जो चल ही रहा था. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन यूट्यूब एंड आई वॉन्टेड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन अप्लाइंग फॉर अ जॉब दैट आई एक्चुअली लाइक. एंड देयरफॉर यस, इट वॉज डिमोटिवेटिंग फॉर श्योर. हमने बहुत सारी वीडियोज बनाई थी उस टाइम पे, बट वी कुड मैनेज इट. मैनेज हो जाता है, पता है, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखो तो मैनेज हो जाता है. Okay, next question. Have you ever dealt with imposter syndrome? If yes, would love to hear your journey through that. Till date, every single day I go through imposter syndrome because मेरे को लगता है कि यार मेरे पास लोग क्यों आ रहे हैं. मेरे को सिर्फ 2.5 साल हुआ है कनाडा में. ग्रो विद नैव चैनल बनाया. मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो करो. मैं बोल नहीं रहा, बट दैट्स व्हाट द इंटेंशन इज, राइट? कि सेव करो, बजटिंग करो. तो मेरे को कई बार लगता है कि मेरे से भी तो बहुत ज्यादा और अकम्पलिश्ड लोग हैं जो ये सब बना सकते हैं. बट द पॉइंट इज कि बहुत सारे लोग नहीं बना रहे हैं. सो इफ आई डोंट शेयर माई स्टोरी, द मिस्टेक्स एज वेल एज द गुड थिंग्स, देन वील जस्ट नॉट लर्न, राइट? सो आई थिंक it's not about imposter syndrome होता है, but I just deal with it by saying that okay, it's maybe I'm not the best person, but I have done something and I've accomplished something, and let me just share that story, and if people resonate with that, good. If not, that's also good. Next question, video on how to become a mortgage agent. इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई थी पोटैटो टॉकीज चैनल पे ही. जस्ट सर्च mortgage agent, you'll find the video. Next question, why don't you both create a forum website where all newcomers could come and collaborate? That is the dream and the hope, and बहुत सारी चीजें हम उसके फेवर में कर रहे हैं, and you will get to know as we move through the years, but obviously it takes a lot of time and a lot of other things that need to come together in order to make that forum, but yeah, that's coming in the works. Would you advise to move from Moncton, New Brunswick to London, Kitchener, Ontario? डिपेंड करता है क्यों मूव करना चाहते हो. अगर फैमिली है यहाँ पे, सो डेफिनेटली डू दैट. अगर अच्छा नहीं लग रहा, जॉब अच्छी मिल रही है किचनर में, तो डू दैट. सो इट डिपेंड्स ऑन योर रीजन. सो आई डोंट नो enough about you and your intentions to be able to answer this, but yeah, just ask yourself, why are you moving? Next question, that was a good answer. Next question, what made you start your YouTube channel? Okay, so I was not the kind of person who would start a YouTube channel or be on social media. We actually thought of creating an ebook. An ebook को बनाई
और फेसबुक ग्रुप पे डाली, वहां पे लोगों ने हमें किक आउट कर दिया थिंकिंग कि ये पोटैटो टॉकीज नाम से कौन सी ई बुक बना रहा है, फ्री क्यों दे रहा है ये सब, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी क्रिएटेड यूट्यूब चैनल. इसके ऊपर हमने पूरी वीडियो बनाई है. वी जस्ट वांटेड टू मार्केट आवर ई बुक एंड दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड दैट, एंड देन हियर वी आर डूइंग QnA and doing other things, but yeah, that was the motivation around it. We made an entire video on that, by the way. Next question. Okay. When are you planning to have kids? You are in your 30s, and why delay the next generation? Okay, this seems to be a constant question. देखो, जिसको नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ानी है प्लीज बढ़ाओ. But this is a very personal question. I don't think people should ask this question, and the reason why, and सिमरन ने बहुत लाइट आंसर दिया था, मैं बहुत हार्ड दूंगा. द रीजन व्हाई यू शुड नॉट आस्क इज यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, राइट? वी शुड नॉट आस्क. आई एम नॉट सेइंग देयर इज अ प्रॉब्लम, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वी शुड नेवर आस्क दीज वेरी पर्सनल क्वेश्चंस बिकॉज दे कैन टच अ रॉन्ग कॉर्ड. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू नॉट आस्किंग टू अस. हमने अपने आप को एक्सपोजर दिया है ऑन यूट्यूब एंड यू हैव द राइट टू आस्क, बट स्टिल it should be a personal choice, and we should not be asking this question to people because there could be many reasons why they're not having kids and not just the will of having kids. Yeah. Next question. How do you guys manage daily cooking, household chores during your busy days? We do have lunch. आज भी लंच आया है. हमने वापस लगवाया लंच. पीछे बीच में बंद कर दिया था, बट लंच बाहर से आता है. टिफिन सर्विस कितने पैसे देते हैं हम? $240. $240 देते हैं फॉर दी ऑलमोस्ट अ मंथ. वीकेंड पे नहीं आता. सो दैट्स हाउ वी मैनेज आवर लंच बिकॉज लंच इज द बिजिएस्ट टाइम. डिनर में ब्रेकफास्ट तो मैंने जैसे बताया बहुत मेरा स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट है. आई ईट 3 eggs. अब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो 3 eggs एग बॉयल एंड वो सब हो जाता है ब्रेकफास्ट. एंड डिनर भी हो ही जाता है. सिमरन गेट्स फ्री एंड सिमरन थोड़ा सा चिकन बना लिया, कभी कभी कुछ कर लिया. सो मैनेज हो जाता है. लंच वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट दैट वी जस्ट गॉट अ टिफिन सर्विस. Okay. Alright. Next question. Love or arranged marriage? अरेंज मैरिज, शादी.com, बहुत ही हमने ये डिस्कस करा था. पूरी एक वीडियो है इसके ऊपर, सो डू चेक दैट वीडियो आउट. बट या वेरी मच एन अरेंज मैरिज थ्रू शादी.com. द ओनली थिंग दैट वाज कॉमन बिटवीन अस, ऑब्वियसली रिलीजन ये वो सब तो था ही, बट वी वर इन द सेम स्कूल, बट वी डिडंट नो ईच अदर बैक इन स्कूल. क्या पता? क्या पता? क्या पता? Okay, next question. How will recession shape job market for 2023, 2024? I think it will be difficult. Anyone who is saying it will be not is probably not saying the right thing. It will be difficult. There are tech companies who are not hiring right now. They are actually firing people as well. We need to make sure now more than ever that we are networking very very well before coming to Canada. That's very important. मैं अपने first job accident में यही कहता हूँ कि the hustle actually has to start before coming to Canada. So make sure that you are connecting with people in your field, talking to them, understanding what certifications are required. Do your homework before coming to Canada because यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में आ जाते हैं जब जॉब नहीं मिल रही होती, जब रिजेक्शन आने शुरू होते हैं. So just make sure it will impact at least in 2023. I'm pretty positive on that, unfortunately. But yeah, and it's for everyone, right? So Simran is also in IT, right? So you never know, right? Simran can also leave her job. So it's a problem for everyone, not just you. Just make sure that you are better than everyone and you are in the top 2%. And that's what I try to do in my first job accelerator as well. Next question, recession से ही related है. Recession is around the corner. Is it a good time to buy a house in Toronto or around? Look, so okay, question is twisted. Like थोड़ा change करते हैं question को, right? Are you prepared to buy a house? Is your job secure? Do you have emergency fund? Are you buying a very expensive house? Are you buying an investment property? Because this is a very good time. Recessions make the most millionaires. ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे लोग कहते हैं और बहुत सारे millionaires कहते हैं. मैं millionaire नहीं हूँ. But I just try to learn from people who have made a lot of money in recessions. But we first need to understand whether we are in a position to buy a house right now or not. So it's more of a personal question you need to ask yourself, and you need to just have that buffer in emergency fund. If you're buying a house without an emergency fund, think twice. Even if you think that your job is secure, right? So because 2023 is likely to be a very difficult year, and we'll be making a video on this either this week or next week. Next question. How many banks a couple should open to distribute income?
बैंक तो एक ही काफी है. अगर बैंक खोल रहे हो तो फिर काम करने की जरूरत नहीं है, बट बैंक अकाउंट्स जो हैं वो एटलीस्ट एक होना चाहिए बिटवीन यू एंड योर वाइफ. सो वन फॉर योर सेल्फ एंड वन फॉर योर वाइफ, फॉर द स्पाउस, एंड दैट्स इट. 2, 3, 4 इतने खोलने की जरूरत नहीं है. एक एक खोलो, एक एक क्रेडिट कार्ड लो, एंड दैट्स इट. जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे मॉर्गेज आती है, जैसे जैसे वो अपने आप एक आध 2 अकाउंट और खुल जाते हैं एक्स्ट्रा. बिजनेस खोला तो बिजनेस किसी और अकाउंट में खोल लिया, तो वो अपने आप डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है बैंक्स की. बट यू डोंट हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर सैलरी. यू जस्ट नीड टू बी very good with budgeting. You need to be very good at managing your expenses through an Excel, जो मैं Grow with Nav पे काफी ज्यादा बात करता हूँ on the other YouTube channel. Yeah. Next question, which is job related. I don't know why I fumble with related. So it's a job related. Job wise, is it enough to land in Canada in March? I am very nervous and anxious. Look, so March is in general the best time to land in Canada because जो ये क्रिसमस वाला टाइम होता है वो वाला खत्म हो चुका होता है. हायरिंग फ्रीजेस सारे खुल चुके होते हैं. मार्च इज व्हेन ऑल द बोनसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो लोग छोड़ रहे होते हैं जॉब. बट या, मार्च इन जनरल इज अ गुड टाइम. डोंट बी एंग्शियस. पीपल लैंडेड इन अ पैंडेमिक एज वेल, राइट? एंड दैट आई इन माय व्यू वाज मच वर्स बिकॉज वी कुड नॉट इवन डू अ लॉट ऑफ स्मॉलर जॉब्स, राइट? सो आई थिंक yes, recession है, but it's not the first recession. It's not just for us. It's for everyone, right? So just make sure that you are in the top 2% of people applying for jobs, and it's not that hard to be that. Yeah. Next question. Should we have life insurance for all the properties that one buys to cover up the loans? 100% you should have your term insurance, if not a whole life. A lot of people say whole life लो, whole life सबके लिए नहीं है. Term insurance होनी चाहिए, for everyone who is buying a house, and it should cover all your properties. Because if, everyone wants to live for 100 years, but, life can happen. And if that happens, you need to make sure that your family is secure, and the mortgages are paid off, right? So it's very, 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 very extremely important to have life insurance. In fact, I will be making a video on that, in the next couple of weeks on the Grow with Nav channel. Next question, which is very interesting. Some of the biggest lessons in your entrepreneurial journey. I think the biggest thing is consistency. There's nothing more than consistency. And मैं एक मंत्र है which I follow. It's in my room as well, and it's said by one of my favorite mentors, Gary Vaynerchuk. Give more than you take. As long as you're giving, yes, services होती हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, right? Services होती हैं, उसी से पैसे कमाते हो, right? But as long as you're giving more than you are taking in dollars, you'll always win. So I think the biggest learning that I've always tried to follow from a few of my mentors is I just try to give as much as possible, and बाकी जो रिटर्न में आएगा, that's good, and that would be one big lesson. But yeah, consistency is very key, क्योंकि कुछ down days भी होते हैं in entrepreneurship. There are times when you don't make money, and you just need to be okay with that, and be consistent and not feel demotivated. It's a long game. Entrepreneurship is not a 1 year, 1 month, 2 month game. It's a 3 decades game, right? You need to play in decade. मैंने नवजोत से इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा था कि चल ठीक है, तू तो सर्विस दे रहा है, यूट्यूब पे तूने चैनल, लाइक हमारा चैनल है, तो गिविंग मोर देन यू टेकिंग मनी फ्रॉम देम, राइट? तो हाउ डू पीपल विद प्रोडक्ट्स डू दैट? तो मतलब जैसे मैं सपोज आई एम सेलिंग अ कप, तो हाउ डू आई गिव मोर देयर? तो नवजोत ने बहुत सही आंसर किया था कि यू गिव मोर बाय जैसे कोई पिन हो गई, स्टिकर्स हो गए, अ गुड मैसेज. दैट्स हाउ यू पर्सनलाइज मैसेज. It is just more like जो हमने एक पोटैटो, द वायरल पोटैटो करके एक कंपनी बनाई थी जहां पे हम पोटैटो बॉक्सेस बेचते थे. उसके अंदर हम एक हैंड रिटन नोट भेज देते हर बॉक्स के साथ, एंड दैट गिव अस अ लॉट ऑफ वर्ड ऑफ माउथ. वो इंस्टाग्राम पे आता था. सो आई थिंक इट वाज स्ट्रेटेजिक, बट वी वर गिविंग मोर. देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इन दैट प्रोडक्ट, राइट? इट वाज नॉट जस्ट द बॉक्स इटसेल्फ. ऑब्वियसली वो भी सरप्राइज ही था जिसको जा रहा था. बट आई थिंक यू जस्ट नीड टू mitigate any of that with your amazing service and some personalized element. Yeah. Next question. What ideas do you have for growth of your business? Oh, so many. In fact, I'll be making a video on Grow with Nav or Potato Talkies, मेरे को नहीं पता, but we'll be making a video on the next 5 to 10 years that we see, and we'll be talking about how Founders Club, which is right now a club for all my clients, all my mortgage clients, but that will grow, massively. So yeah, we'll be making a lot is happening behind the videos. बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है पीछे, but we'll be talking about that once things materialize. 100%. Good answer. Someone is asking, I have been working from home. I don't have any social life,
no car, how to deal with it? देखो अगर ये परेशान कर रही है ना बात, so you need to get out of the comfort zone because this is the comfort zone, right? We think that we are introverts, Yeah. Right? So but you need to get out, go into social events, networking events कितने सारे होते हैं, eventbrite.ca पे जाओ, उस पे बहुत सारे free events, paid events जो भी हो रहा है, जैसे हम हर महीने अब event करने वाले हैं mostly in one place or the other. So just make sure that you're going to those events, making friends, because Canada will be very different. You know, लोग बोलते हैं कि winters की वजह से खराब लगता है, इसकी वजह से, जॉब की वजह से कनाडा खराब लगता है अगर सोशल सर्कल ना हो तो. अगर सोशल सर्कल होना तो यूकॉन में भी आप एंजॉय कर सकते हो. यू डोंट हैव टू बी इन टोरंटो, वैंकूवर, ये सब बेकार की बातें हैं. इवेंचुअली यू नीड टू हैव अ सोशल सर्कल, यू नीड टू हैव फ्रेंड्स, यू नीड टू हैव फैमिली, एंड इफ यू हैव दैट, everything will be okay. So just make sure that you're going out of your comfort zone and going to these networking events, because that will immensely help your morale. Next question. I think this is a very important question. Best skill to make the most amount of money? I think a lot of people will be thinking I'll be saying IT, but in fact the best skill that makes the most amount of money is sales. Yes. Because अगर IT company भी, for example, Simran is working for a consultancy, they are also selling code, right? Everyone is selling something. The only reason why you are hired is you make money or save money for the company. So sales is the best skill. As a mortgage agent, I am selling. As a realtor, people are selling. Even if you are working as an IT person, someone is selling in the company, and that's why you are getting the salary. So sales is the single most amazing skill that you can learn. Even if you don't, it's fine. But to be honest, sales is not just selling a pen, selling a phone, selling, this, right? लोग बोलते हैं ना जैसे sales interview में, sell me this pen. That's not it, right? I am not a very good direct sales person. I can't sell you this, coaster. But I can create content around it. I can create value around it so that you buy this coaster from me, right? So I think sales is a very different skill in today's digital world than it was, 20, 30 years ago. So that's all we have for today. नवजोत से बहुत हमने spicy informational questions पूछे. I hope you like this. We want to do more of this. हमारे पास बहुत सारे ideas हैं on different topics. These Q&As, no filter Thursdays. If you want to have a very specific topic, do let us know. We will make that possible. Alright, that's all we have for today. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए bye bye.